श्री वृंदावन विहारी लाल की। श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिगांसता प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्याः साधुवगृह्णन्त तद्वचः तथा च व्यददुः सर्वं यथा मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृत्य बलीन् सर्वान् आदृताय वसंगवान् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। ભગવાન ગોવર્ધનનાથના ચરણમાં આદર સાથે આપણા સૌના નમસ્કાર હો। અહીંયા પુષ્કર તીર્થમાં બિરાજમાન સહુજ દેવી દેવતાઓના ચરણમાં પણ ખૂબ પ્રેમે કરીને આપણા સૌના પ્રણામ હો। અને અહીંયા રહીને તપસ્યા કરનારા સાધન ભજન કરનારા સહુજ સંતો મહાત્માઓ અને ભક્તોના ચરણમાં પણ आदर साथे अपना सहुना नमस्कार हो। आइए कुछ दर्शन और करें। भगवान श्री हरि ने जब देखा कि यज्ञ की जो विभावना है, यज्ञ की जो व्याख्या है, यह मनुष्य के मन में कुछ भिन्न प्रकार से है। स्वाहा स्वाहा उच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां पड़ती जाएं और इस प्रकार से कोई महायज्ञ संपन्न हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने देखा कि लोगों की श्रद्धा उसमें जितनी है उतनी किसी भूखे को भोजन कराने में नहीं। भगवान श्री हरि ने सोचा है वह यज्ञ तो अपने स्थान पर महान है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि मनुष्य के ही मन में सम्मान होना चाहिए। आपके यहां पर यह यज्ञ हो रहा है और यदि कोई भूखा आपके घर पर आकर के कोई अन्न की याचना करता है तो उसको अन्न देना यह हमारा उससे भी यज्ञ से भी पहले का फर्ज है। क्योंकि यदि व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो यज्ञ करेगा कौन?
याद रखिएगा भैया, धर्म की सब विधाएं अपने आप में महान हैं, लेकिन मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मनुष्य से ज्यादा हम यदि किसी को मानने जाएंगे तो गड़बड़ ये होगी। अब बताओ, मूर्ति है और मनुष्य है, मनुष्य को ही मार दोगे, मनुष्य की ही चिंता नहीं करोगे, मूर्ति की पूजा कौन करेगा? मनुष्य को नहीं बचाओगे तो हवन कौन करेगा? मनुष्य को ही नहीं बचाओगे तो पुष्कर की परिक्रमा कौन करेगा? जब मनुष्य और सामने कुछ भी आ जाए, महत्व मनुष्य का ही है। गाय को हम बहुत पवित्र पशु मानते हैं, लेकिन यदि उससे मनुष्य को यदि कोई खतरा है तो हमको उसका भी कोई रास्ता निकालना पड़ता है। पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण, हम उसकी पूजा करते हैं, अपने पितरों के निमित्त उसको जल देते हैं, लेकिन यदि कभी मनुष्य को वो यदि परेशान करना शुरू करे, किसी के घर में इतना ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर उसका रास्ता करना पड़ेगा। यह बात भारतीयों को पश्चिम से सीखने की है कि मनुष्य का बहुत ज्यादा आदर होना चाहिए। हमने कई बार देखा है विदेशों में, कितनी भी स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन यदि कोई मनुष्य रास्ता पार करना चाहता है तो वो ब्रेक मारेगा, और जो मनुष्य पार करना चाहता है उसको अपने गाड़ी में बैठे बैठे कहेगा कि आप जाइए, और दोनों एक दूसरे को थैंक यू करेंगे। ये चीज ऐसी है जो हमको पश्चिम से सीखने की है। अब ठाकुर जी ने सोचा कि यदि मनुष्य का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर इन धार्मिक क्रियाकांडों का ही, माने शुष्क धार्मिक क्रियाकांडों में यदि फंस जाएगा आदमी, तो वह धर्म का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाता। जिसे धर्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है, जिसे धर्म को ठीक से समझना है, वह मनुष्य का कभी भी अनादर नहीं कर सकता। सबसे ऊपर आदमी है, सबसे ऊपर। इसलिए वो पहले नियम था, श्रीमद् भागवत की पोथी जब शोभा यात्रा निकलती है तो जो अपने सिर पे उठाएगा उसको चप्पल नहीं पहनना है। अब आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जिसके सिर पर भागवत की पोथी हो उसको चप्पल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता क्यों नहीं पहनना चाहिए। दोपहर में शोभा यात्रा निकालते हो और राजस्थान की गर्मी, और उसमें ये सीमेंट से बने हुए या और किसी चीजों से बने हुए रास्ते हैं, ये कितने गर्म हो जाते हैं। उस पर जिसने सिर पर पोथी लिया है उसको ये कहना कि तुम चप्पल मत पहनो, किस हद तक उचित है? भागवत की कथा सुनते हो, आपने कई बार देखा होगा, इसमें ऐसे नियम हैं, फलाहार करना चाहिए और घी पी के कथा सुनना चाहिए और दूध पी के सुनना चाहिए और नीचे सोना चाहिए और ये नाखून नहीं काटना और नहीं बाल काटना, ये बहुत सारे नियम हैं इसमें। तो हमको तो यदि कोई पूछे तो हम तो ये कहते हैं कि फलाहार यदि तुम्हारे पेट के अनुकूल है तो ही करो। व्यास जी ने लिख कर भी दे दिया है हमको, नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि तुमको कथा नहीं सुनने दे तो ऐसा उपवास भी मत करना। फलाहार करना चाहो, उस फलाहार से तुम्हारे शरीर में यदि शक्ति बनी रहती है तो ठीक है। अब होता क्या है, या यूं कहिए कि जो परंपरावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, बोले फलाहार करेंगे, नीचे सोएंगे, लेकिन फिर क्रोध भी उतना ही करेंगे, क्योंकि भूखा आदमी बहुत क्रोध करता। और जिसको वायु का प्रॉब्लम है उसको फलाहार कराना शुरू कर दो, आलू खिलाओ और सिंगदाना खिलाओ, और फिर उसकी क्या दशा होगी, वो कथा सुन पाएगा? तो ये बताना उसको जरूरी है कि भैया कथा है इसलिए तुम फलाहार करते हो, कि फलाहार करना था इसलिए कथा? पूजा सवेरे करनी है इसलिए कथा का आयोजन है, कि कथा का आयोजन हुआ है इसलिए पूजा करते हो? यहां पर पंखा उंखा लगा के बैठना था इसलिए इसका आयोजन किया है, कि अब इसका आयोजन किया है, सुनना है तो ये सब लगाना जरूरी है। अब हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं जो परंपरावादी लोग हैं कि वो महत्व यहां होना चाहिए, उसके बदले उधर होता है। पंखा तो खूब लगाएंगे, गादी वादी खूब सजा के बैठेंगे, और जब कथा शुरू होगा तो धीरे 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 सो जाएंगे।
अब फलाहार किया है, अब पेट बहुत भर लिया, धीरे धीरे कथा का शब्द जैसे ही कान में पड़ा, उनको लगता है कि महाराज जी लोरी सुना रहे हैं, तो सो जाते हैं। सो जा सो जा सो जा तने लोरी सुनाऊं ऐसा लगता है। तो हमको यदि महाराज, भागवत में तो लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी थोड़ी जिम्मेवारी के साथ कुछ सुधार इसकी हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यदि नीचे सोने की तुम्हारे शरीर को आदत नहीं है तो पलंग पर सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नियम बना लो, 8 दिन तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हारे पेट को यदि फलाहार पसंद नहीं है, इसको यदि सूट नहीं करता है, तो रोटी खा लो, इसमें क्या है। रोटी खा लो, लेकिन निश्चय कर लो इन 8 दिनों में हम कभी किसी को अपनी वाणी से दुखी नहीं करेंगे। अब ये भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपनी छोकરમાં તો હોઈ શકે છે, પણ હજી તો આ છોકરમાં તો હોય તો મને બરાબર લાગે છે, એટલે હું કીધા કરું છું। કામ ઘણી વસ્તુ આપણે ન સમજાણી હોય। वही बाल मत काटो, वो ये नाखून मत काटो। अब ये गलती हो गई है, कथा शुरू हो गई और जो काटना बाकी रह गया था, फिर बड़े बड़े नाखून हो जाएं और हम शूर पर नख हो जाएं, उससे तो अच्छा है उसको काट दो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि किसी की बढ़ी हुई लाइन को, अध्यात्म की साधना की लाइन को हम कभी नहीं काटेंगे। ये शायद नियम लेना ज्यादा जरूरी है। हां, एक बात बता दूं, अब ऐसे लोग हुए हैं, ना तो ये झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, वो नियम लेते हैं, ना तो फलाहार करते हैं। उच्छृंखल होते जा रहे हैं, किसी तरह का नियम नहीं। भागवत की कथा सुनते हो, कुछ नियम लिया है? बताओ। हमको पूछोगे तो हम कहेंगे हमने लिया है। केवल पुष्कर की ही बात नहीं, जहां कहीं कथा सुनाते हैं, कुछ ना कुछ नियम लेते हैं। प्यारे, तुम ऊपर बैठाते हो, यदि हम भी कुछ नियम न लें तो ऊपर यमराज 2 डंडे ज्यादा मारेगा, ये हमको पता है। ऐसा नहीं कि यात्रा के, यही तीर्थ यात्रा के स्थानों में जाके जब कथा सुनाए तभी कुछ नियम। सबको कथा सुनने के समय कुछ न कुछ नियम लेना जरूरी होता है। अब फिर नियम ऐसे हों जो तुम्हारी तबीयत के अनुकूल हों। अब हमको ही ले लो, हमको आलू नहीं पचता, फराड़ મને હારો કોઈ દી ભાવ્યો જ નહીં। પછી 11 ને દી શું કરું, તો કે બપોરના હાવ ન ખાઉં અને રાતના આનંદ કરી લઉં હરખેથી। બપોરનો ટાઈમનો જે રહી ગયું ને એ કાઢ લઉં। ફરાળ નથી પચતું, શું થાય? तो जब से कथा सुना रहा हूं मैंने कभी फलाहार नहीं किया। एक बार थोड़ा पागलपन किया था, उसके बाद सुधर गया। वो पागलपन ही था। नारायण, तब हमको सूट नहीं करता तो हम रोज रोटियां खा लेते हैं। एकादशी के दिन पर दोपहर में कुछ नहीं खाना और रात में मस्त भोजन कर लेना। अब भूखे नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, जब रह पाएंगे तो कुछ वो भी नाटक कर लेंगे। कहने का मतलब यह है भैया, संसार हम पर बोझ है ही है। धर्म भी यदि बोझ बन जाए तो उस धर्म की हमको क्या। हमारे गुरुदेव कहते हैं, धर्म बोझ का विषय नहीं, धर्म मौज का विषय है। किस मंत्र को जपना है? बोले जो मंत्र तुम्हारी समझ में आता है वो। किस स्तोत्र का पाठ करना है? बोले जो तुम्हारी समझ में आए वो। कौन सी तपस्या करनी है? बोले जो तुम कर सको वो। याद रखना, आनंद ही भगवान है। जैसे कल सवेरे हमने चर्चा करी थी, परम आनंद ही भगवान है। और उसको छोड़ के कुछ भी क्रियाकांड किया तो वो तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं देगा। अब भूखे रह सकते नहीं और नित्य नियम ले लिया, पूरे पुरुषोत्तम मास में एक ही टाइम भोजन करेंगे। एकादशी को लोग भूखे बहुत रहते हैं। और बोली पाछी छोकर मत। हमको लगता है, हम कुछ बड़े नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है तो अब क्या करें? सुनो, तुम्हारा भाग्य।
हमको लगता है कि एकादशी के दिन यदि भूखे न रह पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 माला ज्यादा फेरना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। यदि भूखे रह सकते हो तो आपको प्रणाम, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हो सके तो उस दिन तो बिल्कुल कठिनता से व्रत लिया जाए, कठोर व्रत लिया जाए कि आज पूरे दिन में हम रोज दोपहर को सो जाते हैं तो आज नहीं सोएंगे, आज कुछ ठाकुर जी को पसंद पड़े ऐसा काम करेंगे, आज हमारे इष्ट देव हम पर राजी हों ऐसा हम कुछ काम करेंगे। अब जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं तुमको पता है, यदि राम जी आपके इष्ट देव हैं तो राम जी को क्या पसंद है आपको पता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बात है। राम जी यदि आपके इष्ट देव हैं तो आपको पता है, राम जी इष्ट देव हैं और एकादशी का व्रत करना है तो फिर राम जी को जो पसंद है वो करो। राम जी को निर्मल मन पसंद है, तो यदि मन एक ही दिन के लिए निर्मल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एकादशी के दिन तो मेहनत करके देख लें कि अपने मन में आज कोई मल ना आ जाए। कृष्ण भगवान यदि आपको पसंद है तो 12वें अध्याय के अंत में इन अंतिम 8 श्लोकों में उन्होंने समय प्रिय कृष्ण ने कहा है कैसा आदमी हमको पसंद है बोल दिए हैं। और महादेव जी यदि आपके प्रिय हैं, महादेव जी यदि आपके इष्ट देव हैं तो महादेव जी को क्या पसंद है आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से जिसका जो इष्ट देव है उनको पता ही होना चाहिए कि उनको क्या प्रिय है, और जिस दिन व्रत करो उस दिन भूखे रह सको बहुत अच्छा, उसे ही व्रत कहते हैं, लेकिन फिर यह भी कोशिश होनी चाहिए कि उनको पसंद पड़ने वाला हम कोई काम करें। इससे देव की बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सेवा पूजा बन पड़ती है। तो हमको तो लगता है श्रीमद् भागवत को जब आप सुने तो जरूरी नहीं है बाल नहीं कटवाएं और नाखून ना काटें, ये कर सको तो बहुत अच्छा, लेकिन उस पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, इन दिनों हम वासना के वशीभूत नहीं होंगे। ऐसी कोशिश हो सकती है, और कोशिश करने की ही बात तो है, अपने कहां सिद्ध हो गए हैं, अपने अभी तो साधक हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि यज्ञ अपने रूप में तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन यज्ञ में यदि मनुष्य की ही बात बाकी कर दोगे, आदमी नहीं है तो पूजा कौन करेगा, आदमी नहीं है तो फिर देखो जहां आदमी नहीं होते हैं वहां पर मंदिर कैसे सूने पड़े होते हैं, जहां आदमी नहीं होते वो आश्रमों में यज्ञ वेदियां ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जहां आदमी नहीं होते वहां कमरे ऐसे ही चूहों बिल्लियों के लिए रह जाते हैं। मनुष्य है तो सब कुछ है। इसी आश्रम को देख लो, जब हम सब नहीं आए थे तब ये कैसा होगा, अब भागवत जी की पोथी पधरा के हम लोग श्रवण और कथन का लाभ ले रहे हैं तो कैसा है, और यहां रहने वालों को पूछ लो, ये सब चले जाएंगे तो उसके बाद इसकी कैसी स्थिति होगी। मनुष्य है तो सब कुछ है। आप ठाकुर जी की पूजा सेवा कर रहे हैं और आपके आंगन में कोई अतिथि आ गया, कोई साधु आ गया, कोई बाबा जी आ गया, हमको कुछ देव मां, और यदि आप उन्हें कहते हैं कि हम हमारे लाल जी को स्नान करा के फिर आपको कुछ देंगी, और वो कह दे बाबा जी की हां ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन वो यदि कहे कि नहीं मैया हम जल्दी में हैं, हमको पहले कुछ दे दो, तो फिर बाबा जी को पहले देना चाहिए। क्यों भाई,
ठाकुर से भी बाबा बड़ा हो गया? बोले वो बात तो नहीं है, लेकिन ये जिंदा है और वो मूर्ति है। मूर्ति को नहलाओ तो मूर्ति को पानी पिलाओ तो मूर्ति को खिलाओ तो तुमसे मूर्ति कहती नहीं है कि वाह मैया आज तो बहुत बढ़िया प्रसाद पवाया। लेकिन उस बाबा जी को अपने आंगन में बिठा करके तुमने यदि कुछ भी फलाहार करा दिया, जलपान करा दिया, तो उसकी आंखों में, जो बहुत प्यासा होता है उसको यदि पानी पिलाओ तो उसकी आंखों में तुम चमक देख पाओगे। जिंदों का ही महत्व है। ये आपने देखा होगा, ये जब श्मशान यात्रा निकलती है ना, तो उसमें सब कांध देते हैं है ना। अब उस मैयत को कांध देने का कहते हैं कि बहुत ज्यादा पुण्य है। मुझे तो ज्यादा चांस नहीं मिला, एक आध बार मैंने देखा है इसको, तो मैंने देखा कि वो थक नहीं जाते हैं लेकिन बदलते रहते हैं। एक ही एक नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसका क्या कारण है? बोले कहते हैं कि जो श्मशान घाट तक जा रहा है, वो श्मशान यात्रा हो रही है, उसमें उस मुर्दे को अपनी कांध देने का बहुत पुण्य है, ऐसा कहते हैं। उस मुर्दे को आधार देने का इतना पुण्य है, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि फिर जिंदे को आधार दे दो तो कितना पुण्य मिलेगा। मुर्दे को यदि आधार दे दिया तब इतना पुण्य मिल जाएगा, तो फिर जिंदे को किसी ने आधार दे दिया, मतलब कि जो गिर गया है उसको हाथ दे दिया, चला जा, बहुत पुण्य है। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन उन बचे हुए पैसों से फिर आदमी आदमी को बचाए, ये और ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री हरि ने सोचा यज्ञ का यह वास्तविक स्वरूप नहीं है, उस रूप को हमारा प्रणाम है, लेकिन यज्ञ का मानवीय स्वरूप होना चाहिए। इसलिए उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई है। फिर तो इसमें क्या होता है भैया, इंद्र महाराज को कभी व्रज को देखने तो आना नहीं था, ऐसे ही पूजा होती रहती थी, हर प्रतिवर्ष यज्ञ होता रहता था, मुफ्त में आहुतियां कमाता था। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि वो इंद्र तुमको कभी हालचाल पूछने तो आता नहीं है, उसका यज्ञ क्यों करते हो, तो व्रजवासियों ने यज्ञ बंद कर दिया। और फिर तो इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विघ्नाय विहताम नृप, जब पूजा बंद कर दी गई ये पता चला तो इंद्र बहुत क्रोध में भर गए हैं, और फिर उन्होंने सांवर्तक मेघ गणों को भेजा है। और भगवान श्री हरि ने देखा कि इंद्र महाराज हमारे व्रज को डुबाना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने कौतुक करके उस गिरिराज को, जिसकी पूजा करी थी, उसको खेल खेल में ही, जैसे एक हाथी एक कमल के पुष्प को उठा लेता है, वैसे ही वाम हस्त से उठा लिया। भागवतकार स्पष्ट रूप में लिखते हैं, इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा, आ टचली आंगळीए એવું ભાગવતમાં લખ્યું નથી હો, એક હાથે ઉપાડ્યા। એટલે શ્રીનાથજીનું જે સ્વરૂપ છે એ તમે જુઓ, આમ નથી, આમ છે, પરફેક્ટ ભાગવત પ્રમાણેનું સ્વરૂપ છે। પણ વ્રજવાસીઓનો ભાવ છે કે ટચલી આંગળીએ વાલે ગોવર્ધન તોડ્યો। હકીકતમાં તો ભાગવત પ્રમાણે તમે જુઓ, ઇતિ ઉક્ત્વા એકેન હસ્તેન કૃત્વા ગોવર્ધનાચલમ, એક હાથે ગોવર્ધન, ભગવાનનું નામ પડ્યું। श्री गिरिराज धर की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, गोकुल वन रावण,
विराज काशी नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा आत्म नांगणे श्री महाकृष्ण 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 जी। हमारी आँखों विषे गिरिधारी रे धारी। 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 मारू तन मन गયું છે જેને વારી રે વારી મારા શ્યામ મોરારી। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जय हो। हमारा प्राण थकी मने वैष्णववाला। हमारा प्राण सखी मन वैष्णव वाला। हमारा प्राण थकी मने वैष्णववाला। हमारा प्राण सखी मन वैष्णव वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे 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 वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की धाचे दर्शन मारू मोही लीधो मन। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी।
महाप्रभु जी घट घट मां बहता रे श्री यमुना जी। श्री महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी घट घट मां बहता रे श्री यमुना जी। श्री महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी घट घट मां बहता रे श्री यमुना जी। श्री महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी घट घट मां बहता रे श्री यमुना जी। मन मंदिर नावासी रे श्रीनाथ 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 जी। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्राक संस्कृत भाषा में कहवाय बिलाड़ीना टोकने। बारिश के समय पर जो कुकुर मुक्ते निकलते हैं उसको छत्राक कहते हैं। छोटी सी छतरी जैसे होते हैं, इसलिए। तो जैसे छोटा बच्चा उस छत्राक को, कुकुर मुत्ते को उठा लेता है, वैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। उसके बाद धारण करने के बाद जो बोले हैं वो हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्व का है। अथाह भगवान गोपान हेम बतात व्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं सगोधन। अथाह भगवान गोपान, भगवान श्री हरि ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और उसके बाद सब ग्वालों से बोले, हे अम्ब, यशोदा से कहते हैं, हे मैया, हे अम्ब, तात नंद बाबा से कहते हैं, और व्रजौ कसह, हे माता, हे पिता, हे सब व्रजवासी, यथोपजोषम विशत, तुम्हारे पास में जो कुछ सामान हो उसको लेकर के सगोधना, गायों को आगे करके इस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाओ। उसके बाद जो बोले ये और महत्व का है। नत्रासइह वह कार्यो मध्यस्ताद्रिनिपातने वातवर्ष भये नालम तत्राणं विहितं हि वः। मदहस्ताद अद्रि निपातने त्रासः न कार्यः। मेरे हाथ से यह गोवर्धन गिर जाएगा ऐसा त्रास, ऐसी शंका मत करना। क्योंकि तुमको यदि लगे ये छोटा सा 7 साल का कन्हैया है और ये 7 कोस को गिरिराज है, इसको उठा के खड़ा तो है, हमको कह तो रहा है कि गायों को लेके और अपनी जो कुछ सामग्री है उसको साथ लेके इसके नीचे आ जाओ, लेकिन यदि ये गिर गया तो नत्रासइह वह कार्यः मध्यस्ताद्रिनिपातने। मेरे हाथ से यह गिरिराज गोवर्धन गिर जाएगा ऐसा त्रास मन में मत रखना। वात वर्ष भयेन अलम, वात कहते हैं वायु को, वर्ष कहते हैं वर्षा को। बोली ये जो जोर जोर से आंधियां चल रही हैं, ये जोर से वर्षा हो रही है, उस भयेन अलम, अब डरो मत। तत्राणम विहितम ही वह, जैसे ही मैंने इस गिरिराज को ऊपर कर दिया, जैसे इसको उठा लिया और आपको बोला कि आप इसके नीचे आ जाओ, न तो अब तुम्हें हवा सता सकेगी न वर्षा। डरना मत कि ये इसके हाथ से गिर जाएगा। ये श्री श्रीनाथ जी बाबा हम सबसे कह रहे हैं, उठा के खड़े हैं, अब आ जाओ इसके नीचे, आ जाओ हमारी शरण में, और डरना मत। तुम्हारे जीवन के गोवर्धन को जो हमने उठा रखा है उसको हम कभी भी गिरने नहीं देंगे।
ये बहुत बड़ा भरोसा है। न त्रासैह वह कार्य, ये एग्जैक्टली गीता जी के उस श्लोक के जैसा है जिसमें ठाकुर जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अरे अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। क्यों शोक करता है भैया? उस दिन बोला था, आज फिर बोल दूं। जिन गुरु जी के पास में बैठ के मैं भागवत पढ़ता था श्लोकशः, वे बताते थे कि बेटा दुनिया में इतना बड़ा पाप पैदा ही नहीं हुआ जिसका नाश भगवान के नाम से ना हो सके। मां शुचः, शोक करोगे तब भी तुम्हारी सांसें जा रही है, और वो सब शोक सबको छोड़ के तुम राधे 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 करोगे तो उसमें भी तुम्हारी सांसें जाएंगी। लेकिन वो शोक करते हुए यदि मर गए तो फिर आना पड़ेगा, और राधे राधे करते मर गए तब तो तर गए। गलती करना मत, हो जाए तो पश्चाताप करना मत, क्योंकि टाइम दोनों में जा रहा है। एक तो भूल करो एमा टाइम जाए, પછી ભૂલ કરીને રડવા બેહો એમાં ટાઈમ જાય। એના કરતા ભૂલ કરવી જ નહીં, પણ થઈ જાય તો પછી અફસોસ ના કરવો, કારણ કે અફસોસ કરવામાં જેટલો સમય જાય એટલી વારમાં તો કદાચ ભૂલ સુધરી જાય। ડોગરેજી મહારાજ કહેતા ને, રસોઈયો રસોઈ કરીને કોઈની સાથે વાત કરવા ગયો તો અહીંયા એની બધી રસોઈ બળીને ખાખ થઈ ગઈ, તે અડધી રસોઈ બળી ગઈ એમ કહેતા। કોઈની સાથે વાત કરવા બેઠો એમાં એની અડધી રસોઈ બળી ગઈ, અને આવીને જોયું કે અડધી બળી ગઈ તો રોવા બેઠો એમાં આખી બળી ગઈ। એ ડોગરેજી મહારાજ કહેતા હતા। ઉપરથી અહીંયા હેઠે આવ્યા એમાં આપણી અડધી રસોઈ તો ઓલરેડી બળી જ ગઈ છે, તો અહીંયા ત્યાં આવ્યા, બાકી અહીંયા આવીએ શું કામ? હવે બીજી અડધી ન બળી જાય એ આપણા હાથમાં છે। હા, મેં એવું સાંભળ્યું છે, આપણે ઘણી વાર એવા ધંધાએ કર્યા હોય, દાળ ગરમ કરવા માટે મૂકી હોય ને એમ કીધું જરાક ધ્યાન રાખજો, ધ્યાન કોણ રાખે? પછી દાળ બેસી જાય ને નીચેથી। એટલે હોશિયાર સ્ત્રી હોય એ શું કરે? પાત્ર બદલાવી નાખે। એટલે ઉપર ઉપરથી જે બેસી નથી ગઈ, જેમાં હજી દુર્ગંધ આવતી નથી, એ દાળને કાઢી લે ને ઓલા પાત્રને વાસણને સાફ કરવા મૂકી દે। એને બદલે જો ત્યાં ચર્ચામાં ટાઈમ જાય તો જે વધી હોય એ દાળ પણ મંડે બેસવા। ऐसा तो ऊपर से नीचे आए हैं तो आधा तो कुछ गड़बड़ वैसे ही हो गया। अब आगे का न हो ये मेरे आपके हाथ में है। जीवन मळ्યું तो जीवता शीखजो रे। सत्संग जीवन तारा ने सुधार शेरे। सत्संग जीवन तारा ने सुधार शेरे। सत्संग जीवन तारा ने सुधार शेरे। सत्संग जीवन तारा ने सुधार जग छे निशाळ। जीव
થવી જ ન જોઈએ. અને જો ભૂલ થાય તો પછી અફસોસ નહીં કરો. જેટલી વાર રડવા બેસીએ એટલી વારમાં ઘણી વખત ભૂલ સુધરી જાય. માં શુચઃ, કૃષ્ણ કહે છે શોક નહીં કર. અફસોસ કરવાથી ભૂલ કદીએ સુધરી જતી નથી. એવું હોત તો અફસોસ કરવાથી જ લોકો સુધારી લેતા હોત. જે સાધન કામ આપતું નથી એવા સાધનને ઘરમાં રાખીને શું ફાયદો? સીટી ન હોય એવા કુકરને રાખો. ચાંપ બગડી ગયો હોય એવું બોસ રાખો. માં શુચઃ, કૃષ્ણ કહે છે આ સાધન કામનું નથી. શોક નહીં કર. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. मेरी शरण में आ जाओ बस. અહીંયા ભગવાન કહે છે નત્રાસૈહ વહ કાર્ય. મનમાં શંકા ન લાવીશ, મનની અંદર ચિંતા ના કરીશ. તારા ગોવર્ધનને મેં જ ઊંચક્યો છે. આ ભગવાને ગોવર્ધન ઊંચક્યો છે એના ઉપરથી જ કદાચ ઓલું ફૂટપ્રિન્ટ્સ કવિતા છે, ખબર છે? એ કદાચ આવી હશે. ભગવાનના અને ભક્તના બેયના પગલા છે. અને પછી કોઈ કોઈ જગ્યાએ પગલાની એક જ પેર દેખાય છે, બીજી નથી દેખાતી. એટલે ભક્ત છે ભગવાનને ફરિયાદ કરે છે કે આપણે મારું જીવન શરૂ થયું ત્યારથી બે જણા ભેગા હાલતા હતા અને પછી મેં બરાબર નોટ કર્યું કે તમે મારી સાથે રહ્યા નથી. અને કદાચ ક્યારેક તમે મારી સાથે ન રહો તો મને કંઈ બહુ ચિંતા ન હતી, પણ મેં બરાબર નોટ કર્યું કે તમે એવે સમયે મારી સાથે ન હતા જ્યારે મને તમારી સૌથી વધારે જરૂર હતી. મારા જીવનનો જે ટફ ટાઈમ હતો, મારા જીવનની જે પરીક્ષાની ઘડીઓ હતી, મને જ્યારે તમારી બહુ જ જરૂર હતી, જ્યારે હું દુઃખમાં હતો, સમસ્યામાં, પીડામાં હતો, એવે સમયે જ તમે મને છોડી દીધો. ભગવાન કહે છે એમ તે કેવી રીતે ધારી લીધું? કહે છે હું મારા જીવનને જોઉં છું તો એની અંદર પહેલાથી જ બે પગલાની જોડ છે. આ બાજુ તમારા બે પગલા, આ બાજુ મારા બે પગલા. પણ બરાબર મારા જીવનમાં જ્યારથી દુઃખ શરૂ થવાનું હતું ત્યારથી પગલાની જોડ દેખાય છે, પણ એક જ. વળી પાછો એ દુઃખનો સમય પૂરો થયો અને વળી પાછા બે પગલા દેખાય છે. ભગવાન ભક્તનો કાન પકડે છે, વાલા તારી વાત તો સાચી કે દુઃખના સમયમાં એક જ પગલાની પેર દેખાય છે, પણ એ એક જ દેખાય છે ને એ તારી નથી, મારી છે. કહ્યું તમારી હોય તો મારા દુઃખના ટાઈમમાં હું ક્યાં ગયો તો? કીધું તારા પગલાની પેર એટલા માટે નથી દેખાતી કે જ્યારે સુખ હતું ત્યારે તો તું હાલતો હતો, પણ જ્યારે દુઃખ આવ્યું તારા જીવનમાં ત્યારે હું તને ઉઠાવીને ચાલતો હતો. તારા પગલા ક્યાંથી હોય? નત્રાસહ્ય વહ કાર્ય મધ્યસ્થાત ત્રિનિપાતન. मेरे हाथ से यह गिरिराज गोवर्धन गिर जाएगा ऐसी शंका कभी मत करना. કોઈના ઉપર નાખી નથી દીધું તો હું ને તમે ક્યાં આપણામાં એવી ત્રેવડ. જો યાદ રાખજો ભાઈ, જિંદગીમાં તમારી કોઈ દી પરીક્ષા થઈ હોય ને તો યાદ રાખજો એ પરીક્ષા દેવાની તમારી ત્રેવડ હશે. પરીક્ષા તો દીધી જ હોય બધાએ, અથવા દઈ રહ્યા હોય. ભગવાન જીવની એટલી પરીક્ષા કરતો જ નથી જેટલી પરીક્ષા જીવ આપી ન શકે. ત્રેવડ બાર ભગવાન કોઈની પરીક્ષા કરતો જ નથી, કરતો જ નથી, કરતો જ નથી. પણ જીવનો સ્વભાવ જ રડવાનો. જરાક દુઃખ પડ્યું નથી ત્યાં તો ઓય 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 કરવા માંડે. ઓલા ઇન્જેક્શન મારે ને એ શું કરે, ઇન્જેક્શન મારતા પહેલા ઓલો સ્પિરિટ થી ત્યાં ઓલો માનસિક રીતે તૈયાર થઈ જાય કે હવે હમણાં હુયો ભરાવશે. હવે જેને વાંધો ન આવતો હોય, આમ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા હોય એને તો કઈ વાંધો ના આવે, પણ અમુક પછી મકોડી પહેલવાને હોય ને એને તો ઓહો, હજી તો ઓલો સ્પિરિટ નું પોતું મારતો હોય ત્યાં ઉઈ 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 કરવા માંડે. ઉઈ ઉઈ હું હજી તો સ્પિરિટ મારું છું, હુયો તો બાકી છે. કભી કભી હમ ભી એસા કરતે હૈ. જીવનમાં ગમે એટલી મોટી પરીક્ષા આપી હોય, યાદ રાખજો ભગવાન તો જ પરીક્ષા કરે છે જો તમે એ પરીક્ષા આપી શકો. સહન શક્તિની બહાર ભગવાન કદીએ કોઈની પણ પરીક્ષા લેતો જ નથી. નહીં તો મરી જાય નહીં. ગોપીઓ ભગવાનની સાથે રાસ કરવામાં સમર્થ છે તો ભગવાનના વિયોગને પણ સહન કરી શકશે એવી ભગવાનને ખબર છે, એટલે એને એ વિયોગ આપ્યો છે.
સહન શક્તિની બહાર ઈશ્વરે હજી સુધીમાં, હા, હરિશ્ચંદ્રમાં એ સામર્થ્ય હતું, એ રહી શકે એમ હતો. જે ગામનો પોતે રાજા, એ જ ગામની ઊભી બજારમાં પોતે પોતાને વેચી શકે એવી એની માનસિક તૈયારી, એવો એ મનથી મજબૂત હતો. એટલે એની સાથે એવું કર્યું. આપણી હારે ભગવાન એવું કરે તો ખાલી કરવાની શરૂઆત કરે ત્યાં જ આપણે ગુજરી જઈએ. એટલે આપણી હારે કરતો જ નથી. જેણે જેણે પરીક્ષાઓ આપી એ બધાની પરીક્ષા આપવાની શક્તિ હતી. યાદ રાખજો, ભગવાન જ્યારે તમારી પરીક્ષા લેશે ત્યારે યા તો તમારી અંદર એ શક્તિને મૂકશે કે તમે એ પરીક્ષા આપી શકો, અથવા તો તમારી અંદર એ શક્તિ પડેલી હશે એને જગાડશે. જ્યાં સુધી જીવનમાં દુઃખ આવતું નથી ત્યાં સુધી તમે કેટલું સહન કરી શકો છો એની તમને ખુદને ખબર હોતી નથી. જ્યારે ભગવાન દુઃખ આપે છે ત્યારે જ તમને ખબર પડે છે કે ઓહો, હું તો અંદરથી આટલો બધો મજબૂત છું. જેણે જેણે પરીક્ષા આપી. અને બીજું યાદ રાખજો, કદાચ એવું બને કે સુખમાં ભગવાન તમારી પાસે ના હોય, પણ જ્યારે જીવનમાં દુઃખ આવે ત્યારે કોઈ દિવસ પણ એમ બોલતા નહીં કે હમણાં મારી સામે ભગવાન નથી જોતો. એલા દુઃખ આવે ત્યારે તો વિશેષ. તમને શું લાગે, જ્યારે નિશાળમાં ગુરુજી ભણાવતા હોય ને બધા છોકરાઓ ભણતા હોય તો ઘણી વખત એવું બને કે ભણાવવાના કોર્સ ને બધું હવે આ દિવસોમાં લગભગ બધું પૂરું થઈ ગયું હોય એટલે પછી શું કે તમે તમારી રીતે લેસન કરો, ગુરુજી નીકળી જાય બહાર. પાકું? જ્યારે ભણાવવાનું પતી ગયું હોય, કંઈ સિલેબસમાં કંઈ બાકી ન હોય, એવે સમયે ઘણી વખત એવું બને કે જે ટીચર છે એ બહાર વયા જાય, છોકરા પોતાની રીતે કાં તો વાતો કરે, કાં તો લખે, ભણે, આ તે પોતાની રીતે કરતા હોય. પણ જ્યારે પરીક્ષા દેવાતી હોય ત્યારે એવું બને તમે તમારી રીતે લખો અને આ વયો જાય બહાર. ઇમ્પોસિબલ. ઇમ્પોસિબલ. જ્યારે તમારી પરીક્ષા લે છે ત્યારે તો એકદમ તમારી બાજુમાં ઉભો રહે. સુખના દિવસો હોય, મતલબ કોર્સ પૂરો થઈ ગયો હોય, પરીક્ષા આવવાની વાર હોય તો એવું બને કે ભાઈ બેસો ને આનંદ કરો. બીજું બહુ અવાજ નહીં કરતા. આજુબાજુ ભણતા હોય છોકરા, એને વાંધો ના આવે. આવું આવું આપણા ટીચરો આપણને કહેતા. બહુ અવાજ નહીં કરતા, પણ શાંતિ, તમને જે મરજી પડે કરો. અંત કડિયું રમતા ભાઈ, ટાઈમ વધે ત્યાં તો. पढ़ाने वाला टीचर तो कभी क्लासरूम से बाहर जा सकता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तब तो वो वहीं. ઉલટાનું એવું થાય વાલા કે પરીક્ષા જેને દઈ દીધી હોય એની છોકરા વહી જાય, પણ ઓલો તો છે ખુદ અન્ય, એની ડ્યુટી છે. જે પરીક્ષા લેનારો છે એની ડ્યુટી છે, ત્યાંથી હલી ના શકે. સામાન્ય પ્રોફેસર, સામાન્ય ટીચર પણ પોતાની ડ્યુટી બરાબર કરતો હોય પરીક્ષામાં, એ સમયમાં એ પોતે પણ વધારે ગંભીર થઈ જાય. આ જગતનો બાપ, આ બધાયનો બાપનો બાપનો બાપ, કૃષ્ણમ વંદે. જગત આખાની પરીક્ષા લેવા, જગત આખાનો ગુરુ છે. પરીક્ષા લેતો હોય ત્યારે તો તમારાથી દૂર એ કદી જતો જ નથી. तो सुख के दिनों में तो अब देखो ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया पांडवों ने, तो ठाकुर जी चले गए द्वारका. और जब तक युद्ध था तो अर्जुन जी वहां युद्ध कर रहे हैं और ठाकुर जी द्वारका के महलों में बैठे हैं और पान खा रहे हैं. ऐसा कहीं देखा है? नहीं, वो भी तो उसके साथ था. वाला अर्जुन ने बाण पछी लाग्या, આગળ કૃષ્ણ હતા. સારથી આગળ હોય, રથી પાછળ હોય. કૃષ્ણને પણ રૂએ રૂએ બાણ લાગ્યા છો. એમાં જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ અર્જુનજી ઉપર ક્રોધે ભરાયા અને એવે સમયે તો બાકી નહોતું. 4 ઘોડા ચારે ચારને હાવ ચારણી જેવા કરી નાખ્યા હતા. કૃષ્ણના પણ શ્રી હસ્તમાં, શ્રી ચરણમાં બાણ માર્યા ભીષ્મે જોરદાર. સ્વનિગમમ પહાય મત પ્રતિજ્ઞામ ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः मम निशीतशरैर् युधितुरगरजो विधूम्रविश्वम् कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशीतशरैर् विभिद्यमान् त्वचि विलसत् कवचेषु कृष्ण
पितामह भीष्म का अंतिम समय था और उस समय जब ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए, ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भीष्म कहते हैं केवल सौंदर्य होता तुम में तो मैं अपनी बुद्धि तुम्हें नहीं देता, लेकिन सौंदर्य के साथ ही साथ तुम में शौर्य भी इतना है। युद्धि तुर गरजा, हाय हाय, ઘોડાના ચાલવાના કારણે થઈને ઉડતી રજથી એટલો બધો ભરાઈ ગયો હતો, ચાર ચાર ઘોડા આગળ દોડે તો પાછળ એ તુરગ રજ, તુરગ કહેવાય ઘોડાને, એના ચરણની રજ, ગાયોની રજથી તો ભરાતો તો ગોકુળમાં, પણ અહીંયા તો ઘોડાઓની રજથી ભરાયો છે. તો કાળો કાળો પણ થઈ જતો હતો પાંડુરંગ. યુધિ તુરગ રજો વિધૂમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્ય. સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી કરો ને અડધી મજા વહી જાય. ધૂળને કારણે થઈને તારા વાંકડિયા વાળ ભરાઈ ગયા હતા અને તને પસીનો થતો હતો, કારણ કે મહેનત પડતી હતી. પસીનો અને ધૂળ એ બે ભેગા થઈને પણ તારા સૌંદર્યને ઓછું નહોતા કરી શકતા. નહીતર એમને આ બધું ઓલું બધું બહુ ભૂહી ભૂહીને બધા નીકળે બહાર, બરાબર, લગન હોય ને આમાં તેમાં, આજ સાંજે ખબર પડશે. એ પીછા પીછ્યું ગમે એટલા ભૂહે, પણ જો પસીનો થયો, જય શ્રી કૃષ્ણ, કુકડા જેવું થઈ જાય માણસ. કારણ કે અહીંથી લાલ, અહીંથી ગુલાબી, અહીંથી કારું ને બધું ભેગું થાય. હોતા ને પસીનો થાય એટલે તરત જ માણસનું સૌંદર્ય છે એ ઓછું થઈ જાય. ધૂળ લાગે એટલે તો સાવ નષ્ટ થઈ જાય. કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતા, શ્રમવારીથી અલંકૃત થયું છે જેનું હાસ્ય. બાય બાય. શ્રમબિંદુથી, પસીનાથી પણ તારું મુખારવિંદ અલંકૃત. હવે તો અલંકાર ધરાવો તો અલંકૃત કહેવાય. પણ કહે છે હે ગોવિંદ તારો પસીનો પણ અલંકાર. महबूब की हर चीज महबूब होती है. એટલે ગાંધી બાપુ જ્યાં મ્યુઝિયમ હોય જો એના ચશ્મા હાચવી રાખ્યા હોય, એની પોતળી હાચવી રાખે. અહીંયા રામધામમાં તમે જાઓ, આજ સવારે જ અમે દર્શન કરવા ગયા હતા તો ત્યાં મહારાજજીને પાદુકાઓ સાચવી નાખે. નહીતર ચંપલ તો પહેરવાની વસ્તુ છે કે પૂજવાની વસ્તુ છે? પહેરવાની વસ્તુ છે, પણ પહેરે નહીં કોઈ. અરે પહેરે હું, પૂજે. કેમ ભાઈ? મહેબૂબ કી ચીજ है. કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતા. અને આવો તું લાગતો હતો એવે સમયે હું તારા એ સૌંદર્ય બાજુ ધ્યાન દેતો હતો, પણ કૃષ્ણ હું શું કરતો હતો? મમ નિશિત શરૈ વિભિદ્યમાન ત્વચિ વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. ભીષ્મ સ્તુતિ પણ ગજબ છે. જુવાનીમાં મોત યાદ આવી જાય. સામે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ઉભા છે. ઈચ્છા મૃત્યુનો સ્વામી છે. ગંગાનો દીકરો, શંતનુનું આ સંતાન. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ પાંચમાંથી પણ એક પણ મહાભૂત જેના શુક્રને સ્પર્શ પણ નથી કરી શક્યો એવો ઉર્ધ્વરેતા મહાત્મા. બાપના શરીર સુખને ખાતર ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરનારો આ દેવવ્રત વસુનો અવતાર છે. વસિષ્ઠના શ્રાપને કારણે થઈને પૃથ્વી ઉપર આવવું પડ્યું છે. આજ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પોતાની દ્રષ્ટિ સમક્ષ જોઈને ભગવાન શ્રી હરિની સ્તુતિ કરે છે. હવે સમયે બોલ્યા છે એ સમયે તો હું જોર જોરથી કચ કચ નિશિત શર, નિશિત એટલે અતિ તીક્ષ્ણ, ત્વચિ વિલસત કવચે, કવચને ભેદી ભેદીને મારા બાણ તમને લાગતા હતા હે ગોવિંદ. એટલે રથથી તો પાછળ હોય પણ સારથી આગળ હોય. કૃષ્ણને પણ ખૂબ બાણ લાગ્યા છે. તો જો અર્જુનજી યુદ્ધના મેદાનમાં છે તો દ્વારકાધીશ કઈ દ્વારકાના મહેલોમાં નથી સુતા. અરે અર્જુનને ઓલું વધારે બાણ મારવા ગયા ત્યાં તો હરિરીવ હંતુમી ભમ ગતો ફરિયા.
યુદ્ધના મેદાનની અંદર ભગવાન શ્રી હરિ બરાબર અર્જુનની સાથે જ છે. ઉલટાનું એવું થતું હતું કે સાંજના સમયે અર્જુનજી આરામ કરવા વહી જાય અને ભગવાન શું કરતા હોય, બોલે ઘોડાઓને લાગેલા બાણ કાઢે અને એ ઘા લાગ્યા હોય ને એમાં મલમ ભરે. ત્રિભુવનનો નાથ ઘોડાને મલમ ભરે, એની સેવા કરે. देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, पाकू से. नत्रासैहवः कार्यो मध्यस्ताद्रिनिपातने वातवर्षभयेनादम् तत्राणम् विहितम्. जीवन में क्यारेक अंधारू होय, जीवन में कभी कभी दुर्गुण आ जाते हैं. भैया मेरे गुरुदेव कहते हैं अंधेरों से लड़ने जाओगे तो अंधेरा कभी नष्ट होगा क्या? अंधेरों में कितनी चाहे लाठी या तलवार घुमा लो, अंधेरा तुमसे कटेगा नहीं. अंधेरे को तुम कुछ भी नहीं कर सकते. उसको भगाना है तो करना क्या होगा, बोले अंधेरों से मत लड़ो, एक छोटा सा दिया जला दो. ठाकुर जी जब कहते हैं मां शुचः, इसका मतलब ही यही है तुम्हारे जीवन में कई दुर्गुण होंगे. अरे मैंने ही तुमको बनाया है, तुम अंदर से क्या हो बाहर से क्या हो मैं सब जानता हूं. तुमने ऐसा क्या किया है जो हमको नहीं पता है. तुम्हारी हर बात को मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम तक पवन पानी प्रकाश पहुंचा रहा हूं. तुमको इतना अच्छा घर दिया है, पहनने को इतने अच्छे कपड़े दिए हैं, इतना अच्छा आजू बाजू वालों का वातावरण दिया है. प्यारे हमको सब पता है तुम कौन हो, तुम कैसे हो. दुनिया तुम्हें कुछ भी जाने, हम तो तुम्हें असली रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे प्रेम करते हैं. ठाकुर जी यही कहना चाहते हैं, अंधेरों से लड़ो मत. तुम यदि हमको प्रिय होना चाहते हो तो अंधेरों से लड़ने से कुछ नहीं होगा, एक दिया जलाओ. गुरु जी तो ये कहते हैं दिया जलाओ. हमको पूछो तो हम तो ये कहेंगे कि भैया दिया जलाने का प्रयास करो. આપણે કદાચ આપણા આત્માની અંદર પ્રદીપ્ત ન થઈ શકીએ. સાધુ સંતો બહુ મોટા કહેવાય, એ લોકોએ પોતાના જીવનના દીપકને સળગાવીને પોતે પ્રકાશ પામ્યા છે. એ પ્રકાશના જ પ્રભાવથી એ લોકો પરમાત્માનું સંપૂર્ણ દર્શન કરી શક્યા છીએ. હું ને તમે વિષયી છીએ. આપણે આપણી જાતને સાધક કહીએ છીએ, બાકી છીએ તો વિષયી. આપણે કદાચ દીવો પેટાવી શકીએ ન પેટાવી શકીએ, આપણી અંદર આત્મવિશ્વાસ હોય પણ ખરો ના પણ હોય, પણ આપણે ગુરુજીના ચરણમાં બેસીને કમસે કમ નિષ્ઠાપૂર્વક મહેનત તો કરી જોઈએ. दिया नहीं जलेगा तब भी लोग यही कहेंगे कि प्रकाश करने की कोशिश में मर गया. हाँ, मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, ऐसी मौत भी बहुत अच्छी. जागने की कोशिश में जो बहुत गहरी नींद में सो जाए उसको भी कोई बात नहीं, उसको माफी मिलती है, क्योंकि उसने खुद को जगाए रखने की चेष्टा तो करी. दिया जले ना जले कोई चिंता मत करो, लेकिन जलाने की कोशिश तो करो. कृष्ण कहते हैं अंधेरों से लड़ना बंद करो. अंधेरों से लड़कर कोई आज तक जीत नहीं पाया है. जीते हैं केवल वे जिन्होंने दिया जलाने की चेष्टा की है. अर्जुन जी भी कृष्ण को देखते थे और दुर्योधन भी देखता था, नहीं? लेकिन अर्जुन की आंखें पहचानती थी ये कौन है. दुर्योधन की भी तो आंखें. कृष्णनु साक्षात दर्शन जे मोटा मोटा योगीओने न थाय ए दुर्योधन ने हाव मफत में थतुं. पण काई फरक पड्यो. આનો મતલબ એવો કે પારસમણી ઘરમાં પડ્યો છે એટલી વાત માત્રથી ઘર હોનાનું ન થઈ જાય, એ ઉપાડવો પડે અને લોઢાને અડાડવો પડે. સાધુ સંતો મારા તમારા ઘરની અંદર આવી આવીને વયા જાય, આપણામાં એક રત્તી ભાર ફેર ન પડે તો કંઈ મતલબ નથી. તમારે એ પારસમણીને પારસમણીના રૂપમાં જાણવો પડે. તમે તમારા લોખંડ જેવી વૃત્તિઓને એ પારસમણીને સ્પર્શ કરાવવી પડે. થોડીક તો દીવો સળગાવવાની મહેનત કરવી જ પડશે. દીવો પ્રગટાવવાની બિલકુલ મહેનત નહીં કરો ને કદાચ એમ થશે કે ભાઈ તો એમને થઈ જશે. એમને કોઈ દી કંઈ થતું જ નથી. मेरे माशुक की अदा है निराली. एनी स्टाइल बड़ी जुदी जाती है. तो भगवान श्री हरि ने हमको बहुत यहां पर भरोसा दिया है.
न त्रास वह कार्य मध्यस्ताद्रि निपातन। डरना मत, मेरे हाथ से ये गोवर्धन गिर नहीं जाएगा। और फिर तो सब ब्रजवासी लोग नीचे आने लगे। 7 दिन तक इंद्र बरसात को वर्षा करता रहा और उसके बाद में फिर थक गया। बुद्धि ठिकाने आ गई कि मैंने तो जिसके साथ लड़ने का संकल्प किया वो तो मेरा भी सेठ है। वो कोई सामान्य ग्वाला नहीं है। मैंने इसको सामान्य ग्वाला समझ करके व्रज को डुबो देने की आज्ञा कर दी, लेकिन ये सांवर्तक मेघगण भी थक गए और व्रज में तो धूल उड़ रही है, कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत शर्मिंदा हो गया। वर्षा हो गई है बंद। फिर तो ठाकुर जी ने सब व्रजवासियों से कहा कि अब निकल जाओ बाहर। सब लोग बाहर निकल आए और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु स्थापयामास लीलया पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। भगवान जी ने उस गोवर्धन भगवान को फिर उसके स्थान पर जहां था वही रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? बोले सब ग्वाले मिल गए। मिल करके नंदराय जी और यशोदा मैया के पास आए और कहने लगे कि सही सही बताओ ये बच्चा किसका है? नंदराय जी ने कहा हमारा है। बोले बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। बोले ऐसा क्यों लगता है? बोले ये काला है और तुम गोरे है। न माता जी पर गया है न बाबूजी पर गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों में से किसी का नहीं है। हाचू बोलो, उपाड़ी आई क्या थी? नंदराय जी के गમે એટલું ધારું તો એ હાચું ન બોલી શકું, કારણ કે વસુદેવજી જે મૂકો આવ્યા હતા તઈ હું તો હૂતો હતો. વસુદેવજી જયારે મૂકો આવ્યા ત્યારે જશોદા ખુદ હૂતી હતી ને. અરે ક્વ સપ્તહાયનો બાલઃ અને ક્વ મહાદ્રી વિધારણ. 7 વર્ષનો નાનકડો બાળક ક્યાં અને ક્યાં આવડા મોટા પર્વતને ઉઠાવવાની વાત. આજ સુધીમાં હજારો છોકરાઓને જોયા છે પણ આવો છોકરો જોયો. નંદરાયજીએ કહ્યું આપની વાત સાચી છે. આપ સૌને આશંકા એટલા માટે થાય છે કે જે દિવસે ગર્ગાચાર્યજી મહારાજાનું નામ પાડવા આવ્યા એવે સમયે અમે આપને કોઈને ખબર ન પડે એમ ગુપચુપ નામ પાડી લીધું હતું. ગર્ગાચાર્યજીએ મને કહ્યું હતું તસ્માન નંદાત્મજોયમ તે નારાયણ સમો ગુણૈ. તારો દીકરો નારાયણ સમાન ગુણવાળો છે. સાધુ સંતો પાસેથી સુંદર વસ્તુ સાંભળવા મળી. નારાયણ સમો ગુણૈ મતલબ નારાયણ સમાન ગુણવાળો છે. સંતે એમ કીધું નહીં નહીં, નારાયણ અસમહ ગુણૈ. નારાયણે આને જેવો નહીં. ભક્તોના ભાવ છે. નારાયણ અસમહ ગુણૈ. કૃષ્ણના ગુણ અને નારાયણના ગુણ ભેગા કરો ને તો નારાયણ 4 ચાસણી નીચે ઉતરે. આ 4 ચાસણી વધારે છે. ક્યાં નારાયણ વાંસળી વગાડે? ન વગાડે. 1 ચાસણી વધે. ક્યાં નારાયણ લીલાઓ કરે છે? ચલો 2. ક્યાં નારાયણ પાસે પોતાની પ્રિયા છે? રાધાજી છે નારાયણ પાસે? કૃષ્ણ પાસે છે? એમ છે. लीला माधुरी, प्रिया माधुरी, वेणु माधुरी, ये सब कृष्ण में ज्यादा है. तस्मान् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः. नारायण असमः. બધા જ ગોવાળિયાઓ કૃષ્ણને અને નંદરાયજીને પગે લાગ્યા છે. પછી તો ઇન્દ્ર મહારાજ આવ્યા, કૃષ્ણ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. ગાયોએ પણ ભગવાન શ્રી હરિ ઉપર સુંદર અભિષેક કર્યો છે. ભગવાનનું નામ પડ્યું ગોવિંદ. પછી તો